everyone. Once again, welcome to my channel. My name is Shiva Krishnan and I upload videos related to data analytics and its tools such as Excel, Power BI, and AI. So, in case you are new to my channel, I would like to extend a warm welcome to all of you and to the existing subscribers. Thank you very much for staying connected with me. तो नए व्यूअर्स को वार्म वेलकम है यहाँ पे एंड एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को थैंक यू वेरी मच ठीक है सच्ची में खुशी है कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड हो राइट मैं आपका सपोर्ट को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ थैंक यू वेरी मच राइट सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट मॉक इंटरव्यू विद एआई सीरीज राइट तो कुछ साल पहले ना हमारे पास ये फैसिलिटी ही नहीं होता था कि मॉक इंटरव्यू कैसे प्रैक्टिस किया जाए राइट की तैयारी कैसे किया जाए राइट बट नाउ वी हैव एआई राइट इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे हम लोग ठीक है एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर साफ पढ़ के बता देता हूँ ठीक है सो I'll read this disclaimer all right a few years ago we did not have the luxury of practicing for the job interview right even before the job interview I mean for it did not exist for every role all right so now okay before we move forward let me read the disclaimer very clearly okay so that you can know that this is not a promise or guarantee okay so before we jump into the hot seat, a quick heads up. Today I'm doing a mock interview with an AI acting as a fashion show recruiter. This is purely for practice, strategy, and entertainment and educational purposes. So AI is an incredible tool to sharpen your interview skills. But remember, real world hiring managers look for that human spark and unique industry experience that code can't fully replicate. Use this as a training ground, not a definitive hiring blueprint. Okay. So this video does not guarantee real world employment or reflect the hiring policies of actual fashion organization. Okay. So let's get started. So the job role that I'm going to cover is for fashion show manager job role. All right. And definitely I've never worked in this category. I have no experience. So I will be very candid. Okay, I'll be very honest here, right? I will not fake anything here, okay? Because any which ways in a job interview, if you try to fake, the recruiter is smart enough to, identify that in just some time, in a matter of minutes, and in some occasions in a matter of hours, ठीक है? तो रियल लाइफ में अगर आप फेक करोगे ना तो वो स्मार्ट इंटरव्यू जो रिक्रूटर जितना भी है मेजोरिटी तो इस भी स्मार्ट होते ही हैं तो उनको पता लग जाता है कि आप फेक कर रहे हो ठीक है राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट है एक्ट एज अ रिक्रूटर फॉर फैशन शो मैनेजर जॉब रोल तो यहाँ पे मैं जो चीज़ मुझे नहीं आता है तो नहीं आता बता दूंगा राइट सो इफ़ आई डोंट नो समथिंग आई विल सी दैट ओके आई डोंट नो दिस राइट एंड वी विल सी हाउ AI acts all right and also modify this prompt a little bit. I'll drop the microphone for some time, okay, while I quickly type this. Okay, so you saw this, right? Uh, yeah. Now, in real world, recruiters also look at your body language, your eye expression, your facial expression, the way you're explaining, you know, all these nuances are there, right? ठीक है तो मैं हिट करता हूँ एंटर ठीक है oh no the AI got confused
ठीक है, एआई कंफ्यूज हो गया, डायरेक्टली फीडबैक पे आ गया वो, ठीक है। मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन, tell me about your experience managing large scale events. How do you ensure everything runs smoothly under tight deadlines? I'll say this is the question, right? I'll say, uh, a few years ago, during 2006, while I was doing the software course, right, HTML and all that, .NET, VBA, .NET and all that, few years ago, right, in Mumbai. Um, that point of time in that institute, there was an institute called AppTech. Some people in Mumbai they know about this. वहाँ पे मुंबई में एपटेक नाम का एक इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। आई विल सो मैं इसको रिकॉल करते हुए बोलूँगा कि आई हैव नॉट so I'll be dropping the microphone down when I type something, and then when I have to explain this, I will keep the microphone close to my mouth, okay, while explaining this. Right? Give me a moment.
Okay, excuse me. So, right, these are the questions. Okay, and I'm going to explain what are my answers. Okay, you guys have seen this in the screen, right? First question is, tell me about your experience managing large scale event. How do you ensure everything runs smoothly under tight deadlines? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आप लार्ज स्केल इवेंट को कैसे मैनेज करते हो और कैसे इंश्योर करोगे कि सब कुछ सही सलामत और एकदम स्मूथली चले, राइट? तो मैं बोलूँगा कि मैंने कुछ मेजर फैशन शो ऑर्गेनाइज नहीं किया है, एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन जिसका फैशन शो के साथ कोई लेना देना नहीं था, राइट? This was my answer. Fashion shows often face last minute chaos, models running late, outfits missing, um, technical glitch. Can you share a time you handled a crisis effectively? मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, right? I'll just say I don't know, okay? Because this is a person applying for this fashion show manager role, even though that person does not know anything about this. But it turns out to be that उसको लगता है कि फैशन शो मैनेजर में पैसा अच्छा है तो चलो अप्लाई करके देख लेते हैं, राइट? सो हियर we will see the power of AI. Okay, this role requires balancing creativity with logistics. That's the third question. How do you collaborate with designers, sponsors, and production teams to deliver a cohesive show? अम, ठीक है, ये लॉजिस्टिक और डिज़ाइनर के साथ कैसे कोलाबरेट करोगे, स्पॉन्सर्स, प्रोडक्शन टीम? मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता, राइट? नेटवर्किंग इज़ क्रिटिकल. हाउ वुड यू अट्रैक्ट स्पॉन्सर्स एंड मीडिया कवरेज? तो इसमें एक गेस वर्क किया है मैंने बोला कि ठीक है कि कॉस्ट्यूम मैन्युफैक्चरर्स को मैं बोलूँगा आपको फ्री मार्केटिंग मिलेगा, you don't have to pay anything for this, and models are here to demo about your costumes. ठीक है, यही है फैशन शो के बारे में, राइट? फाइनली क्वेश्चन होगा कि आपको हायर क्यों किया जाए, राइट? वाई शुड वी हायर यू? ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन ये था कि स्पॉन्सर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे, मीडिया कवरेज? तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, कॉस्ट्यूम मैन्युफैक्चरर्स को बोलूँगा आपको फ्री मार्केटिंग मिलने वाला है, बिकॉज मॉडल्स आपको अ, आपके कॉस्ट्यूम्स के बारे में रैम्प वॉक करके दिखा देंगे, तो फ्री मार्केटिंग हो जाएगा, राइट? एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज, आपको हायर क्यों किया जाए कंपेयर टू दोज हु हैव डायरेक्ट फैशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस? मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता, मैं सीखने को तैयार हूँ, ठीक है? सो मैं बोलूँगा नाउ आई वांट टू नो इंटरव्यू रिजल्ट. ठीक है, I'll say I want to know the interview results. ठीक है, बोलता है कि ब्लंट इवैल्यूएशन है कि जैसा रियल वर्ल्ड में होता है, ठीक है? इवेंट मैनेजमेंट, यू ऑनेस्टी कि रिक्रूटर व्यू दैट्स टू लिमिटेड, ऑब्वियसली यस. वीक फिट है, ठीक है? मतलब इसमें फीडबैक ये थे कि आपने ऑनेस्टली बताया कि आपने एक छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये तो बहुत लिमिटेड है फैशन शो मैनेजर रोल के लिए, जो कि 200-500 लोग या कई दफ़ा हज़ार हज़ार लोग भी होंगे, राइट? फैशन शो का मतलब ये हुई है ना कि हज़ारों लोग हो जाएंगे इसमें शो में, जो ऑडियंस जो है, ठीक है? मल्टीपल वेंडर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स हैंडल करना पड़ेगा, तो आप एक वीक फिट हो, राइट? दैट्स व्हाट इज एआई हैज गिवन ना, ब्लंट फीडबैक. ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट, आपने बोला आपको कुछ नहीं पता, ये मेजर रेड फ्लैग है, ठीक है? फैशन शोज वैसे भी काफ़ी केओटिक होते हैं, ठीक है? एंड इसमें क्या है कि ये क्रिटिकल गैप है, राइट? मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, बैलेंसिंग क्रिएटिविटी लॉजिस्टिक्स, आपने कहा कि आपको नहीं पता, आपको, तो दिस shows no understanding of collaboration with designers, sponsors, and production team. So, I mean, I'll say this in English also, right? The first is that you showed honesty, but you manage only small event for 50 people, but that's too limited. Because fashion shows involve managing 200, 500, or even thousands of attendees, multiple vendors, and everything. So you don't know anything much about this, so you're a weak fit, right? The crisis management. Uh, the second question was about crisis management, and I said I don't know.
This is a major red flag, again, indicating that I'm not a fit at all for this role. Then the third thing, balancing creativity and logistics. I said I don't know anything, right? That how to collaborate with designers, sponsors, and production team. Recruiters expect at least a hypothetical strategy. Take a verdict that you're not at all competitive, right? Fourth, networking and sponsorship. You guessed that offering free marketing could work. This is a basic idea, but it lacks depth. Sponsors expect ROI, visibility metrics, structured partnership package. Verdict needs development. Why hire you over your, ठीक है? तो तीसरा क्वेश्चन भी देखा, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन फेल हो गया, सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली बुरी तरह से फेल हो गया इसमें, तीसरा क्वेश्चन इसमें भी बुरी तरह फेल हो गया, चौथा क्वेश्चन एक गेस वर्क था, लेकिन रिक्रूटर्स को क्या चाहिए होता है कि बेसिक आइडिया ये, तो इसमें डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करना होगा स्पॉन्सर्स को क्या चाहिए, आरओआई चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विजिबिलिटी मैट्रिक्स चाहिए, स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप पैकेज, तो ऑब्वियसली ये वर्डिक्ट है कि नीड्स डेवलपमेंट, ठीक है. Then the last question, why hire you over experienced candidates? You said you're not sure, but you can learn if trained. This is too passive. Recruiters want confidence, transferable skills, and a clear value proposition. Verdict, not persuasive. So overall recruitment assessment, recruiter assessment, honest, self-aware, willingness to learn, weakness, no fashion industry experience, no crisis management experience, limited event. In a real world, you would not be selected. Exactly. So the answer is I am not selected, right? तो इसमें यही पूछूंगा. So that means I, एग्जैक्टली exactly, ठीक है. इसमें क्या है कि आप सेलेक्ट नहीं हो गए हो, आप रिजेक्ट हो गए हो, राइट. सो दैट बिकॉज वेरी लिटिल एक्सपीरियंस, right, which is not even relevant at all. No crisis management, no collaboration strategy. Networking answer too basic. Final answer lacked confidence. Recruiter's verdict not selected. ठीक है. Now it has also given me the feedback. Start with assistant role. Apply for event coordinator or assistant show manager position to build credibility. Volunteer at Fashion Week. Even unpaid experience adds weight to your CV. Build crisis handling stories. Frame small event hiccups as learning experiences. Study how ROI is presented to sponsors. Position yourself as adaptable and resourceful, not just trainable. Okay. So now, before I wrap this video, I will also ask some important question, right? And let's see how this could be a game changer here. Okay. Um, Now I'm going to drop the microphone down once again. Okay, give me one moment.
ऑलराइट, ठीक है। तो अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एआई ने इतना फीडबैक दे दिया कि फैशन शो मैनेजर के लिए मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, इवेंट कोऑर्डिनेटर रोल के लिए मैं अप्लाई करता हूँ एंड आई एम रेडी टू डू दिस फॉर फ्री। ठीक है, मुझे बदले में एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। तो वो बोलता है, एआई ने कहा कि ठीक है, आपके पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप सीखने का एटीट्यूड रखते हो और आप प्रूफ ऑफ प्रायर इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, कमिटमेंट है। लेकिन कंसर्न्स क्या है कि ये अनपेड वर्क का जो है ना, लेबर कंप्लायंस इश्यूज है, तो इसमें मतलब नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस लेटर ये तो तभी मिलेगा जब आप ऑफिशियली ऑन बोर्डेड हो। स्केल ऑफ एक्सपीरियंस 50% इवेंट इस छोटा शॉट है, लेकिन इट्स नॉट गुड इनफ। तो रियल रिक्रूटर वर्डिक्ट है कि यू विल नॉट बी हायर्ड। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। इसमें एआई ने कहा कि वॉलंटियर के लिए अप्लाई करो, एज अ वॉलंटियर या फिर एज एन इंटर्न, राइट। तो आई सेड दैट कि ओके, आई एम विलिंग टू अप्लाई एज अ वॉलंटियर, नाउ टेल मी। तो एआई ने कहा कि ठीक है, पॉजिटिव है कि आप मोटिवेटेड हो सीखने के लिए, पूरा छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज किया आपने, कमिटमेंट आपके अंदर। ठीक है, कंसर्न इतना ही है कि मोस्ट कंपनीज प्रेफर स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप एंड ये इतना भी बड़ा कंसर्न नहीं है, बट इन इन दी इन सिंपल टर्म्स वर्डिक्ट है कि एक्सेप्टेड एज एन इंटर्न वॉलंटियर इवेंट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसमें कंडीशन ये कि बी onboarded formally as a volunteer intern. After completing a tenure for 6 you'll receive an experience letter confirming your contribution. ठीक है, तो ये मिलने के बाद क्या होगा कि फिर ऑफिशियली एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर अप्लाई कर सकते हो, एंड देन फैशन शो मैनेजर फाइनली उसका रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, दिस इज हाउ इट गोज, राइट। ओके, एंड फाइनली ऑल्सो, ओके, राइट। सो देखो अभी आई वाज जस्ट सेइंग कि ठीक है दैट मैं फ्री में काम करूंगा एज अ वॉलंटियर इवेंट कोऑर्डिनेटर, राइट। तो इसमें क्या है कि मैं ठीक है सिलेक्ट हो गया, राइट। assume that in the इंटरव्यू कि सेलेक्ट हो गया, राइट। नाउ अज्यूम कर लेते हैं कि आई वर्कड एज एन इवेंट कोऑर्डिनेटर एंड अभी एक एज एन एक्सपर्ट इंटरव्यू कोच मैं एआई से मैं पूछा कि स्ट्रैटेजी बताओ ताकि फैशन शो मैनेजर रोल के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर सकूं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि रीफ्रेम एक्सपीरियंस, पोजिशन दिस एज अ ट्रांसफरेबल, हाईलाइट लॉजिस्टिक्स, वेंडर मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें फ्रेजेस इसमें बताया कि इस टाइप का फ्रेज यूज़ करो कि इन माय रोल एज एन इवेंट मैनेज कोऑर्डिनेटर आई मैनेज एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड इंश्योर्ड स्मूथ एग्जीक्यूशन, develop crisis stories, fashion shows, chaos. You must have crisis management examples ready. Even if event or small, frame challenges as learning during a 50% event, 50% event.
50 people event. Our caterer was late. I quickly reorganized the schedule and kept guests engaged until service resumed. ठीक है? तो रिक्रूटर्स को चाहिए कि आप काम हो, डिसिसिव हो, एंड ऑन द स्पॉट आप वेरी स्पॉन्टेनियसली आप डिसीजन ले सकते हो, राइट? Show creative plus operational balance. Fashion show managers need both creative vision and operational discipline. Strategy, talk about how you collaborate with designers on aesthetics. I believe, an example, I believe in translating creative vision into structured execution, aligning designer ideas with sponsor expectation and production feasibility. Strengthen networking pitch. Sponsors and medias are critical. Learn sponsorship pitching and media engagement. I would attract sponsors by offering tailored visibility package, logo placement, social media campaign, VIP seating. Okay, craft a confident value proposition. Recruiters will ask why you over someone. You must emphasize that you're adaptable, you have transferable skills and a hunger to grow. Okay, right? And that's it. I'm wrapping this video. All right. And I'll be covering some other job role mock interview with AI and for other job roles as well, right? ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि हाउ आई वाज वेरी कैंडिड एंड वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, यहाँ पे कुछ फेक नहीं किया. रियल इंटरव्यू में ऐसे ही होता है मोस्ट लाइकली. ठीक है, आप उल्टा सीधा कुछ भी जवाब दोगे, राइट? इफ़ यू गिव सम काइंड ऑफ अ रैंडम आंसर,